हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, स्टार्टर एक्टिविटी आपको दी गई है। टिक द एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। आपको उन एक्शन पे टिक करना है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या रीडिंग अ न्यूज़पेपर होने वाला है तो उस पर टिक करना है। वेंट टू द मार्केट, ठीक है। इट विल रेन, ठीक है। Now let's start the chapter. So the first topic is future tense. The future tense is used to talk about actions that have not yet occurred, that are planned for times to come. मतलब उन एक्शंस के बारे में बात करना जो हुए नहीं है पर जो प्लान किए गए हैं कि हम वो करने वाले हैं या होने वाला है वो एक्शन, ठीक है। Like the present tense and the past tense, the future tense also has 4 forms. Future tense के भी 4 forms हैं. First one is simple future tense, then future continuous tense, then future perfect tense, and then future perfect continuous tense. So let's know about them in detail. So the first one is simple future tense. Formation of the simple future tense आपको यहाँ पर दिया गया है affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. जैसे कि यहाँ पर I के साथ स्टूडेंट shall और will दोनों ही यूज होता है। V के साथ हम will का यूज करते हैं, ठीक है, जबकि V के साथ हम shall का यूज भी करते हैं स्टूडेंट, ओके। और you के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ हम will का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, I shall visit, I shall not visit, shall I visit, shall I not visit, then we shall visit, we shall not visit, shall we visit, shall we not visit, then you will visit, you will not visit, will you visit, will you not visit, then he she it will visit, he she it will not visit, will he she it visit, will he she it not visit. Now here you can see the rule. Affirmative sentences. The affirmative sentences are formed by using shall / will with the main verb. मेन वर्ब के साथ shall will लगेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I shall invite her, okay. Now next thing is negative sentences. The negative sentences are formed by placing not after shall or will. shall और will के बाद not लगेगा negative बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I shall not invite her. Now next is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing shall / will before the subject. Subject से पहले shall और will हम place करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल shall I invite her. Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by placing shall will before the subject. Subject से पहले shall will लगेगा and not before verb, और verb से पहले not. Okay, for example, shall I not invite her? अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए स्टूडेंट। वी यूज शल फॉर आई एंड वी, हम आई एंड वी के साथ शल यूज करते हैं। वी यूज विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यू ही शी दे, यू ही शी दे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ऑफन विल इज ऑल्सो यूज फॉर आई एंड वी, मतलब कभी कभी विल भी यूज होता है आई और वी के साथ, ठीक है। Next thing, the question form for I and we is always shall I और shall we. जो question form होता है I और we का वो हमेशा shall I और shall we होता है, will I will we नहीं होता, ठीक है। Now the next thing is uses of the simple future tense. So यहाँ पर आपको uses बताए गए हैं. The simple future tense is used to describe the actions that have not yet taken place or that are planned for time to come. उन एक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करना जो अभी हुए नहीं पर वो उन्हें प्लान किया गया कि वो होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्शन विल टेक प्लेस इन नवंबर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अ प्लान दैट हैज बीन मेड, एक प्लान जो कि ऑलरेडी बना दिया गया है और फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल्स एनुअल फंक्शन विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे। नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। Now the next type of future tense is future continuous tense. Formation of the future continuous tense आपको यहाँ पर दिया गया है affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. I shall be coming, I shall not be coming, shall I be coming, shall I not be coming. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ing फॉर्म है and be फॉर्म भी है, ठीक है। Next thing is we shall be coming, we shall not be coming, shall we be coming, shall we not be coming. Next one, you will be coming, you will not be coming, will you be coming, will you not be coming. Next one, he she it will be coming, he she it will not be coming, will he she it be coming, will he she it not be coming. Now here you can see the rule. Affirmative sentences, the affirmative sentences are formed with shall / will plus be plus ing form of the verb, यानी कि shall will के साथ be फिर उसके बाद ing form लगेगा verb के साथ। For example, I shall be leaving for Guwahati tomorrow. Now next one,
Negative sentences are formed by putting not after shall, will and before be. Not लगाना shall, will के बाद और before से पहले यानी कि be से पहले. Okay. For example, I shall not be leaving for Guwahati tomorrow. Now next one is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing shall, will before the subject. Subject से पहले हम shall, will लगाएंगे. For example, shall I be leaving for Guwahati? Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by placing shall, will before subject. Subject से पहले shall, will लगेगा and not after be. ठीक है, और not जो है वो and not before be यानी कि be से पहले not लगेगा. ठीक है. For example, shall I not be leaving for Guwahati? Okay. Now let's see uses of the future continuous tense. The future continuous tense is used to talk about an action that will be going on at the later time. उस action के बारे में बात करना जो कि होने वाला है later time में. He will be, for example, he will be hosting the party at this time on Tuesday. Next thing, to ask polite questions about the future. Future के बारे में polite question पूछना. For example, will you be joining us for the picnic? Now student, इसी से related आपको exercise दी गई है जो कि आपको complete करना है. Now the next type of future tense is future perfect tense. Formation of the future perfect tense आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम have का use, shall का use करेंगे और third form of the verb use करेंगे. जैसे कि I shall have painted, I shall not have painted, shall I have painted, shall I not have painted, we shall have painted, we shall not have painted, shall we have painted, shall we not have painted. Next one, you will have painted, you will not have painted, will you have painted, will you not have painted. Next one, he, she, it will have painted, he, she, it will not have painted, will he, she, it have painted, will he, she, it not have painted. Now let's see the rule. Affirmative sentences. The affirmative sentences are formed with shall / will plus have plus past participle form of the verb, that is third form of the verb. For example, I shall have returned. Next one, negative sentences. The negative sentences are formed by placing not between shall and have. Shall और have के बीच में हम not place करेंगे. For example, I shall not have returned. Now next is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing shall before subject. Subject से पहले हम shall लगाएंगे जैसे कि for example, shall I have returned. Next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by putting shall, will before subject. Subject से पहले हम shall, will लगाएंगे and not after it और not उसके बाद. For example, I shall not have returned. Now let's see the uses of the future perfect tense. The future perfect tense is used to talk about action that will be completed by a particular point of time in the future. उस action के बारे में बात करना जो complete होगा at a particular point of time in the coming future. For example, in 1 hour I shall have reached Kolkata. Now इससे related आपको exercise दी गई है student जो कि आपको complete करना है. Now the next type of future tense is future perfect continuous tense. Formation of the future perfect continuous tense आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम shall have, been और ing form use करेंगे. जैसे कि I shall have been waiting, I shall not have been waiting, shall I have been waiting, shall I not have been waiting. Next one, we shall have been waiting, we shall not have been waiting, shall we have been waiting, shall we not have been waiting. Next one, you will have been waiting, you will not have been waiting, will you have been waiting, will you not have been waiting. Next one, he, she, it will have been waiting, he, she, it will not have been waiting, will he, she, it have been waiting, will he, she, it have, will he, she, it not have been waiting. Okay. Now let's see the rule. Affirmative sentences. The affirmative sentences are formed with shall / will plus have plus been plus ing form of the verb. Okay, जैसे कि for example, I shall have been reading my book. Now next is negative sentences. The negative sentences are formed by putting not after will / shall. Will और shall के बाद हम क्या लगाएंगे? Not लगाएंगे. ठीक है, जैसे कि for example, I shall not have been reading my book. Now next is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing will shall before the subject. Subject से पहले हम will shall लगाएंगे. For example, shall I have been reading my book? Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by placing shall, will before the subject. Subject से पहले हम shall, will लगाएंगे, not after it और not उसके बाद. For example, shall I not have been reading my book? Now let's see uses of the future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to express an action or an event that will progress over a period of time which will end at a point of time in future.
मतलब कि उस एक्शन और इवेंट के बारे में बात करना जो कॉन्टिन्यूस चलेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, फिर एक पर्टिकुलर टाइम जो कि फ्यूचर में वो एंड हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल बाय नेक्स्ट मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.